गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थ में व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित्य नेम के, सधर्म के सत्कर्म के। वो चीड़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में। हर इंद्रियों पर ताव कर, हम वीर हो अति धीर हो। उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा। अध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे। घर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। तो थैंक यू ऑल। आया मुझे प्रेयर करने का है? तो आप लोग कैसे प्रेयर करते हो रोज और आज कैसे करी, उसमें फर्क समझ में आया? तो आगे से जब भी प्रेयर यहाँ होगी तो इसी स्टाइल में अपने को करनी चाहिए। सही है ना स्टाइल? तो टुडे वी हैव टॉपिक्स फॉर डिस्कशन. One is on treatise on the report on income tax dues, and other is taxation of private trust under the Income Tax Act 1961. So both topics are related to the income tax only, and in fact what happens many times, suppose a particular person is selling his property to another person, another buyer. So in that case, there are possibilities that the person, the seller of that property, is liable to pay certain income tax dues to the income tax department, to the government of India. So this section 281 is there, which says that their properties can be attached, mortgaged, or there are a lot of other things as per the section 281, which will be discussed by the speakers in detail. And then they say that if that property is being sold by the property holder to another buyer without taking any no objection certificate from the assessing officer, that sale may be treated as void if it is found that sale has been made without considering the, without making payment of the income tax dues to the department. And another topic is taxation of private trust, which basically deals with formation of the trust as well as their taxation. And basically trust is formed particularly for the purpose of any beneficiaries. So suppose there are certain properties and those properties to whom the benefit of those properties should go. So many times under the family settlements or for any other purpose, a trust is created where there are trustees who basically hold those properties in the trust with them. So trustees are not beneficiaries.
beneficiaries may be someone else. So what is the mechanism that how to form that trust? What is the taxability of those trusts? Will be discussed by the speakers, respective speakers. So I would rather request them to first discuss the relevant provisions and whatever has been issued by the whatever guidance has been issued by the ICI. So that may be discussed, and wherever required, I will try to support. And you are also requested that you take active participation in this class wherever you feel that yes, there is any questions. या किसी को अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो ध्यान रहेगा ना कहीं कोई तुम्हारे इनकम टैक्स का डिमांड तो नहीं है स्टाइपेंड पे टैक्स देते हो कि नहीं देते तुम लोग टैक्सेबल ही नहीं है लेकिन कोई शेयर वेयर में किसी ने काम तो नहीं कर लिया तो उसने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम किया हुआ है पता चला कि इसने टैक्स ही नहीं दिया तो तुम्हारे काम का है कल को कोई प्रॉपर्टी बिकेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वापस ले लेगी तुमसे तो स्टार्ट हर्ष गर्ग will start the basis. Good afternoon, everyone. In our today's strategy class, we will be discussing the topics of treaties or income tax dues, which will be covered by me. Another topics are formation of private trust and taxation of private trust, which will be discussed by my fellow Harsh Mantri and Vaibhav Mangal respectively. So, starting with the first topic, that is treaties on income tax dues. The whole topic is covered under the ambit of Section 281 of Income Tax Act 1960. So first, let's have an overview what section says. As discussed by Sir, whenever in India an assessee is trying to sell his property or asset to someone else, to a buyer, outsider buyer, and any demand is pending against him, then the Income Tax Department can treat the sale to be void. Now let's have a look at the language of the section, what the Section 281 says of Income Tax Act. Where during the pendency of any proceedings under this Act or after the completion thereof, but before the service of notice under Rule 2 of the second schedule. So basically, this para deals with the timing of the application of the provision of Section 281. Next para reads, any assessee creates a charge on or parts with the possession of any of his assets in favor of any other person. Such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of tax or any other sum payable by the assessee as a result of the completion of said proceedings or otherwise. Looks too hard. So let's have an example to understand the same. Suppose I am selling some property or some assets to Vaibhav. And some demand has been raised against me that is visible on the income tax portal. We will have a look at how the demand is seen on the income tax portal. In that case, when a demand is pending against me and I am selling some property to Vaibhav, that contract of sale can be declared void by the income tax department. Now, question comes, when I am selling my property, then what is the issue with the income tax department? Why they are treating it to be void? So the reason basically is when a demand has been raised against me. So at the time when the demand is realizable, it might be the position that I'm not having sufficient assets to pay the demand. In that case, the income tax department may have some revenue loss due to the same. So in order to protect that revenue loss, the assessing officer can term the contract of sale to be void. Now question comes, can the assessing officer himself term the sale contract to be void or the transfer contract to be void? So the answer to the question is no. Income tax department or the higher authorities have the authority to declare the contract of the sale or the mortgage to consider it to be void. Assessing officer cannot unilaterally term a contract to be void. He can only make provisional attachment of the property. So where we are discussing about the assets, the transfer of the assets or mortgage of the assets. What type of assets are covered under the ambit of Section 281? So 4 classes of assets have been described, which are covered under the ambit of Section 281. These are immovable properties such as land and building, plant and machinery, shares and securities, and fixed deposits. When some are covered under Section 281, then some are excluded too.
What are those assets? Those assets are furniture and fittings. So initially I mentioned about the property, just for an example. All these type of assets are covered. Immovable properties as well as your plant and machinery of the SSC. Then Plant shares and securities and shares fixed and deposits. securities as well as fixed deposits. But the asset excluded includes furniture and fittings, vehicles, intangible assets, and you have to know that fixed deposits have been included in the asset definition. On the other hand, recurring and saving and current deposits is excluded from the purpose of Section 280. Cash in hand is also excluded. Leasehold rights, stock in trade, and capital assets converted into stock in trade. All are excluded from the provisions of Section 280. Now, we will talk about when the Section 281 is applicable. Section 281 will be applicable only when the asset value being transferred or mortgaged exceeds rupees 10,000 in value and income tax demand pending against the assessee exceeds rupees 5,000. Now, we have a question regarding the same. You have to listen it carefully and answer the same. XYZ Holdings Private Limited entered into a contract with ABC Company to sell some of its assets worth rupees 1 lakh, while a demand of rupees 3,000 in respect of tax dues was raised against XYZ Holdings. Whether the provision of Section 281 of Income Tax Act 1961 applicable to the above transaction? The reasons for the same? Yes. So we have to see that both the limits have to cross, not a single limit. Here the word use is and. So the asset value is required to be exceeded rupees 10,000 and the income tax demand also needs to exceed rupees 5,000. Here the asset value exceeded although rupees 10,000, but the demand was less than 5,000. So the provisions of Section 281 are not applicable. So basically, for our practical purpose, ये limits कुछ भी नहीं है ना? तो basically ये सब चीजें कहाँ काम आती है? जहाँ पे जनरली से करोड़ों रुपए की डिमांड है ना? एक हैंडसम अमाउंट जो है ना वो असेसी ने पेमेंट नहीं किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में या अपील प्रोसीडिंग्स में उसका केस चल रहा है. In those cases, or say there are certain defaults of the financial institutions regarding payment of loan by the SSC. So if there is any default, and for those default, suppose the SSC sell it and make payment to the financial institutions. So for all practical purpose, such SSCs are first required to take the certificate from the income tax department that whether the income tax dues have been paid or not. So once that certificate is being issued by the income tax department, then only liquidation can be done by such financial institution of those assets. तो ये वहां पे प्रैक्टिकली 5,000 10,000 की लिमिट के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इतनी परवाह नहीं है. फॉर थ्योरेटिकल पर्पस दीज लिमिट्स आर देयर, बट प्रैक्टिकली जहाँ पे एक हैंडसम अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट है वहां इस तरीके के सर्टिफिकेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है. और जहाँ पे खासकर की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पेमेंट करने हैं, कोई दूसरा लेंडर है उसको आपको पेमेंट करना है और उसके लिए आप सेल कर रहे हो और इधर आपके प्रोसीडिंग्स भी चल रही है, तो उसमें ये देखना होता है कि क्योंकि सपोज वो सेल करके और लोन चुका देवे और इधर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इधर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अमाउंट भी पेंडिंग है, तो वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी असेट लेगा वो नल एंड वॉइड है. या सॉरी असेट क्या लेगा उसको तो आप सपोज पेमेंट वहां कर दो और कोई दूसरा पर्सन जो असेट लेगा दैट इज नल एंड वॉइड, और वो उस असेट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वापस ले सकता है, अटैच कर सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ डिमांड व्हिच इज बीइंग रेज्ड अगेंस्ट दैट असेट. है ना? अब आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझाइए. There are certain provisos to the section also. By proviso we mean exceptions, right? So the proviso says when the transfer is made for the adequate consideration and without notice of demand due or proceedings pending. इसमें कह रहे हैं कि जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी एसेट का या मॉर्गेज कर रहे हो और वो मॉर्गेज या ट्रांसफर एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हुआ है,
और आपको पता भी नहीं था उस टाइम तक कि कोई डिमांड रेज हुई है या प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तब वो सेल का ट्रांजेक्शन वैलिड हो सकता है, उसको वॉइड नहीं किया जा सकता बाय असेसिंग ऑफिसर। सेकंड प्रोविजो सेज आप ट्रांसफर जब वैलिड होगी आपकी, जब आपने प्रीवियस परमिशन ले लिया असेसिंग ऑफिसर से। और ये अपन पहली सेक्शन में पढ़ भी चुके हैं कि अगर आप प्रायर परमिशन ले लेते हैं असेसिंग ऑफिसर का और फिर ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो ट्रांसफर वैलिड होगा। अब इधर अपन ने कहा है कि आपको नोटिस नहीं है कुछ डिमांड का, आपको पता नहीं आपके अगेंस्ट कोई डिमांड रेज है या नहीं। अब आप वो कैसे चेक करोगे कि आपके अगेंस्ट कोई डिमांड रेज है या प्रोसीडिंग पेंडिंग है या नहीं? उसके लिए आप सीधे ई फाइलिंग पोर्टल, आपका आईटीडी पोर्टल है, उस पर आप लॉगिन कर सकते हो यूजिंग योर पैन एंड पासवर्ड। आफ्टरवर्ड्स आपको पेंडिंग एक्शंस पे क्लिक करना है और उधर आपको आपका रिस्पांस टू आउटस्टैंडिंग डिमांड दिख सकता है और ई प्रोसीडिंग। ये इसमें भी दिया हुआ है या आपने अलग से निकाला? आई थिंक ये जो इन्होंने काम किया ना, क्योंकि मैंने इसमें देखा था, यहाँ पे ये सब चीजें नहीं दी थी ट्रीटीज में, एंड ही हैज गॉन थ्रू द पोर्टल, और पोर्टल में कहाँ पे प्रैक्टिकली किस तरीके से चीजें है, क्या वहां पे कोई डिमांड रेज हो रही है या नहीं हो रही है। सो आई थिंक जिस एक्सटेंट तक ये टॉपिक को तैयार किया ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि यार मैंने ये बुक दे दी और उस बुक को अंदर जो लिखा हुआ है बस उतना ही अपने बता दिया, तो वो आपको समझ भी नहीं आएगा, है ना। इन्होंने बिल्कुल टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके और थोड़ा सा डेमो स्लाइड बनाई ना, ये अपने को बेटर तरीके से समझना। तो इट्स ए गुड जॉब, एवरीवन शुड लर्न दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो आप इस पे लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन से अपने जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स है या जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उसका आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं और उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बायर है तो ये इंपॉर्टेंट सेलर के लिए नहीं हो रहा है, बायर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जब बायर परचेज कर लेगा तो जो भी उसने परचेज किया है वो तो वॉइड हो जाएगा ट्रांजेक्शन। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि उसको बताओ कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या डिमांड पेंडिंग है या नहीं। अब जैसा कि अपन ने बात की कि आपको पहले असेसिंग ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 281 टू मेक द ट्रांसफर वैलिड। अब उसका जो भी प्रोसेस है वो अभी अपन एक बार डिटेल ले लेते हैं उसका। फर्स्ट पॉइंट इज you have to make an application under form IENS 281 giving particulars of any demand outstanding, total assets owned by the assessee, and also the assets proposed to be transferred by the assessor. Once the application has been filed with the assessing officer will give the permission considering all the situations. Accordingly, the buyer or mortgagee has to obtain the copy of the form filed with the assessing officer in order to be safe with the transaction process. But here it is to be noted that in whose favor the permission is given is not the ultimate transfer. अब मेरे को फॉर्म जो ITNS 281 है, अभी उसका भी ओवरव्यू दूंगा, पूरा एक बार एक्सप्लेन होगा फॉर्म भी। तो उसमें मुझे बताना पड़ता है कि मैं किसके नाम पे एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ या किसको ट्रांसफर कर रहा हूँ या मॉर्गेज कर रहा हूँ। अब मैंने जिसका नाम लिखा है फॉर्म में और उसके पास अल्टीमेट ट्रांसफर या मॉर्गेज नहीं है, किसी और को जाएगा फाइनल जो ट्रांसफर होगा, तो उस केस में वो परमिशन वैलिड नहीं होगी। मुझे परमिशन उसी पर्सन के नेम पे लेनी है जिसके नेम पे वो ट्रांसफर होने वाला है या मॉर्गेज होने वाला है। जो भी सेल रजिस्टर्ड जिसके नेम पे होने उसी का नाम आना चाहिए फॉर्म ITNS 281, तभी वो सेल वैलिड होगी। नाउ जो आपने परमिशन लिया अभी ITNS 281 में फॉर्म में, वो वैलिड है फॉर 182 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और द डेट ऑफ अटैचमेंट व्हिचएवर इज रेडी। व्हाट डू वी मीन बाय डेट ऑफ अटैचमेंट? डेट ऑफ अटैचमेंट ये हो सकता है आपके अगेंस्ट डिमांड पेंडिंग थी, अब वो रियलाइजेबल है तो असेसिंग ऑफिसर एक प्रोविजनल अटैच, पहले तो प्रोविजनल अटैचमेंट था जब तक डिमांड पेंडिंग थी, अब जब वो रियलाइजेबल है तो वो डेट ऑफ अटैचमेंट पे एक ऑर्डर इशू कर सकता है असेसिंग ऑफिसर। उस केस में आपकी लाइबिलिटी है कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो आप 182 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट कर लो या डेट ऑफ अटैचमेंट के ऑर्डर से पहले पहले कंप्लीट कर लो, वरना आपको दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर द ट्रांजेक्शन और द मॉर्गेज। एंड वंस आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है आपको एओ के पास सारी डिटेल्स फाइल करनी पड़ेगी कि आपने कब ट्रांजेक्शन किया और आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, जो भी आपका डिटेल्स है पूरी आपको एओ के पास फाइल करनी पड़ेगी। नाउ वी विल हैव अ लुक ऑफ द फॉर्म ITNS 281. So it contains some application to the assessing officer. Here it reads like details of the assessee is to be given. He requests for the permission to be granted under the clause 2 of the proviso to section 281. Proviso 2 of the section 281 deals with the prior permission from the assessee, right? Here part A deals with the general particulars of the assessee who is transferring the asset. Part B
determines the outstanding demand as on the date of application. What demands are outstanding and under which section the demands are outstanding against the assessor. In Part C, the assessee has to disclose about the total assets owned by him, the description of the assets, place where the asset is situated, valuation of the asset as on the last balance sheet date or as on the date of application, if not available, whether any chart exists on the same, or any other remarks. Now, Part D deals with the details of the transaction to be held on basis of the permission. It describes about the name of the party in whose name the transaction is to be proceeded, address of the party, PAN of the party, the asset to be transferred. The specific detail about the transaction is to be processed in Part D of the form. Finally, a verification is given by the assessee that all above information is true to his knowledge. Now, what are the benefits of getting the prior permission from assessing officer? ट्रांसफरी के ऊपर दिस इज बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है पर्टिकुलर जा रहे हैं वो आपके ट्रांसफर के जा रहे हैं, जो असेट्स हो रहे हैं वो भी ट्रांसफर के जा रहे हैं. अब ट्रांसफर ये वो सारी चीजें तो वो अपने आप गेन नहीं कर सकता. असेट्स ओन कितने हैं उसकी उसकी सारी डिटेल्स क्या क्या है, उसके पैन तो चलो वो ले सकता है पर सारी डिटेल्स नहीं ले सकता. इसलिए जो भी ओनर्स है वो ट्रांसफर के ऊपर है, उसको फाइल करनी पड़ेगी ITNS 280. विजुअल लिखा था जिसके अंदर लिखा था अगर दोनों गुड फेथ में करते हैं तो वो एप्लीकेबल होगा ट्रांजैक्शन. बट उसके अगली स्लाइड में अपन ने देखा कि कोई भी चेक कर सकता है कि उनके खिलाफ डिमांड्स कौन कौन सी रेज होती है. उसमें गुड फेथ का कैसे रहा कि जैसे किसी आदमी ने चेक नहीं किया तो गुड फेथ कंसीडर किया जाएगा. गुड फेथ ऐसे कंसीडर नहीं किया जाएगा. गुड फेथ की एप्लीकेशन में क्या समझते हो कि आपने रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं उस चीज को चेक करने के लिए. अब रीजनेबल स्टेप्स में आप इतना तो चेक कर सकते हो कि सामने वाले का पैन और फोटो लेके, या आप उसके पास जाके तो चेक कर सकते हो कि आपकी कोई भी डिमांड शो हो रही है नहीं हो रही, कुछ रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, तो वो चीजें आपकी गुड फेथ में आती है. ठीक है. Now, benefits of getting the prior permission. The utmost benefit is the mortgagee gets the assured title of the property. Once the prior permission is given, department cannot declare the sale to be done. Circumstances under which the permission is usually granted by you. So there are different points or different situations under which the permission is granted by you. When there is no demand outstanding, then AO will have no issue and he will issue the permission to sell the asset. If some demand is outstanding and the demand is undisputed, that the assessee has to pay the demand, then in that case, permission will be granted by AO only once the payment is made of the demand. In case demand is likely to arise in the next 6 months, then we have a section 281B of Income Tax Act, under which assessing officer has the power to provisionally attach the property of the assessee in case he is of the view that a demand is likely to arise in next 6 months against the assessee. In that case, order of attachment can be issued by the assessing officer. In case demand outstanding is disputed, no clarity that whether the demand is realizable or not, then it is the owners of the taxpayer to indemnify the outstanding demand either by way of bank guarantee or by showing that he has sufficient assets to pay the demand whenever it is realized, or by department retaining the first charge on the assets proposed to be transferred. After the indemnification, the permission under Section 281 will be granted by AO. Timelines within which the AO has to grant the permission. If there is no demand outstanding, then the AO will grant the permission within 10 working days of the application. If undisputed demand is outstanding, then the AO should grant the permission within 10 working days of the payment of undisputed demand. In case demand outstanding is disputed, then the permission will be granted by AO only after 10 working days of the indemnification of the demand. अभी अपन ने डिस्कस किया था कि अगर डिस्प्यूटेड डिमांड है तो उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कि हाँ मैं पे कर सकता हूँ जो भी डिमांड आएगी आगे, आप ये सेल प्रोसीड कर लेंगे. और डिमांड अगर नेक्स्ट 6 मंथ्स में होने वाली है अराइज, तो उस केस में बताया था 281B में असेसिंग ऑफिसर प्रोविजनली अटैच कर सकता है असेट. अब असेसिंग ऑफिसर जो असेट अटैच करने वाले हैं, अगर वो असेट डिफरेंट है देन द असेट टू बी कंसीडर्ड अंडर द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन, तो वो 15 वर्किंग डेज के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, परमिशन दे सकता है.
Now case comes अनडिस्प्यूटेड डिमांड में असेसी को पहले पेमेंट करना पड़ेगा तब परमिशन मिलेगी. अब हो सकता है असेसी ने पेमेंट नहीं किया या इंडेमनिफिकेशन करना पड़ेगा पहले असेसी को और तब परमिशन मिलेगी, और हो सकता है असेसी ने इंडेमनिफिकेशन भी नहीं किया. तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर 10 डेज के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगा, रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को जो भी फाइल हुई है, और उसका एक रीजन नोटिस भी दिया जाएगा और अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड भी दी जाएगी टू द असेसी. अब हमने देख लिया कि सर्टिफिकेट अपन ले सकते हैं असेसिंग ऑफिसर से विदाउट द बिफोर मेकिंग द ट्रांजेक्शन. वैसे ही आप एक सीए रिपोर्ट भी ले सकते हो ऑन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम टैक्स ड्यूज. सीए रिपोर्ट आजकल जो भी बायर्स और लैंडर्स है वो सब कुछ तो चेक कर नहीं सकते और परमिशन में बहुत टाइम लग सकता है. इसलिए आजकल कई लोग जो होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करा लेते हैं कि कोई भी डिमांड या प्रोसीडिंग्स पेंडिंग तो नहीं है लाइक इनके अगेंस्ट असेसी के अगेंस्ट. उस केस में कोई भी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा कि तो कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक बायर आपको ये कह रहा है कि साहब एक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट ले लो कि साहब देयर इज नो इनकम टैक्स डिमांड ड्यू. सो द एंटायर shifting of the responsibility is being there on the chartered accountant, है ना, कि भैया ट्रांजैक्शन हमारे बीच में हो रहा है, तुम पहले सर्टिफाई करके दो कि ये ट्रांजैक्शन के अंदर कोई इनकम टैक्स का डिमांड तो ड्यू है तो नहीं. तो अभी उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे सपोज बायर परचेज कर लेता है फ्रॉम द सेलर और बाद में वो सर्टिफिकेट गलत निकलता है, तो द चार्टर्ड अकाउंटेंट मे बी इनटू ट्रबल. Therefore, the institute has come out with this guidance that how a chartered accountant should issue the certificate. So report how he should issue the report on such income tax dues, and basis that what are the MRL which one has to take from the department, what is the engagement letter, sorry, not department, from the buyer, and all that, all these things are discussed in this particular guide. So in various situations it is also possible that demand is raised or a revision is pending. In such case our dues are likely to be reduced, but this estimate can be relied on even only if it is given by some experts like chartered accountants. So in that case, reports become some necessity to obtain before proceeding with the transaction. Now, अब जैसे सर ने कहा कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है चार्टेड अकाउंटेंट की whenever he is issuing such report to proceed the transaction. So there are certain duties of CA in respect of its report. First duty is to verify whether any demand is outstanding against the assessee. He can check the online portal like I have showed the demo. He can verify whether any proceedings are pending, or he can take a management representation letter whether any notices has been received for demand or any proceedings are pending against the assessee. Another important duty of chartered accountant in this respect is to obtain appointment or engagement letter from the assessee. Here a specimen is presented of the letter of engagement or appointment. Here it reads like a request by the assessee to provide a report or certificate in respect of the income tax dues outstanding as on a specific date, or to cover any proceedings pending against the assessee. It also includes the responsibilities and limitations of chartered accountant in respect of the report, responsibilities and representation of the management, fees and billing of the report, and finally a signature and name of the client and acceptance by the chartered accountant to the specific engagement letter. Now we have read about both certificate by the assessee officer and a report by chartered accountant. What is the difference between two? On the one hand, a certificate is a matter of fact as it is given by the authorities. It contains some higher level of attestation and accuracy. But on a report by chartered accountant, it is based on opinion only, and it is a professional judgment of the chartered accountant. Opinion based on the data available on the data available, and it is based on professional judgment and skepticism of the chartered accountant. So that's all from my side, and I request So good presentation. Good afternoon, everyone. I will be discussing about formation of private trust and family trust. So
Before discussing, we need to clear it that private trust is completely different from public trust. It does not come under the ambit of Section 8. If you don't clear this ambit, you won't understand what this topic is. Before before seeing the process of formation of private trust, we need to understand what private trust is, what are the types of private trust, and what is the difference between private trust and public trust. And first, we will be going towards the meaning of private trust. So, trust which is constituted for the benefit of particular individuals that can be particularly ascertained by the persons creating it is called private trust. So, the benefit is for particular individuals, which is ascertained by settler. Settler is the one who is creating the trust, and particular individuals may be family members, relatives, or friends, etc. So these are also known as beneficiaries, and this trust is created um, so that there is a benefit, specific benefit given to these individuals, and that may be also documented. So why the private trust is created? So that there is a legal form to the transactions, and that guarantees the assets, money, or properties that are employed for just the benefit of appointed beneficiaries. A private trust may be formed by trustee, and if it is formed by trustee, then it is known as inter vivos trust. Whereas if a private trust is formed by will, will document, then it is known as testamentary trust. So, who are the parties involved with in the private trust? There are mainly four parties: a settler, who is also known as grantor or author. He prescribes the objectives of the trust, its conditions, functioning of trustees, how he will function, what are his responsibilities, and he also appoints protector who guides the trustees, and also he appoints beneficiaries for whose benefit the trust is created. So trustees controls the functioning of trust, and it is his responsibility that the benefit is deferred to the beneficiaries, and grantor is the person who devolves his assets to the trust for its purpose. Now, as we have learned the basic definition of private trust, we have learned this basic meaning. So now we can differentiate it. What is public trust and what is private trust? So in public trust, the class of beneficiary is not defined. It is not confined to any specific individuals. It is very uncertain as public is very large and anyone can become beneficiary. Whereas in private trust, class of beneficiary is very sure and known as they are very definite people. They may be family members, individuals, relatives, friends, and in public trust, the purpose can be charitable or religious. But in private trust, purpose can never be charitable. It can be religious or it can to earn money so that the purpose is served, but it can never be charitable. As soon as the purpose becomes charitable, the object becomes unlawful and void, and it can be converted later on into the public trust. And public trust is more permanent than private trust as it can never be dissolved. Whereas private trust is not a permanent trust if it contains the dissolution clause in its deed or document, and it can be dissolved if it is a revocable trust. So can you give some example that when it can be dissolved? If in a trust deed, it is given that, sir, I will be You will be disclosing covering this in this. and the legal status of public trust is mandatory as the registration is compulsory, so it has to be legally registered. Whereas in private trust, legal status is not mandatory. The registration is not compulsory, but it is advisable by the institute so that there are no fights later on. Then public trust can amalgamate or merge with another public trust having similar objectives, but private trust can never be amalgamated or merged with another public trust. And public trust is governed by the acts passed by state government. Many people have a myth that public trust is governed by Indian Trust Act 1880, but no, it is governed by acts passed by relevant state governments,
and private trust is governed by Indian Trust Act 1880. Moving forward, what is family trust? What is its meaning? Family trusts are common types of trust used to hold assets to run a family business. Suppose I am a settler, Mr. X, and he creates a trust so that he can run family business, and he he can appoint any of his friends, families, or relatives. Suppose Mrs. Y, he appoints Mrs. Y as the trustee. She will look after the functioning of the trust, and it will look after the benefit of the beneficiaries. Beneficiaries may be his children, and it can also have a purpose. Suppose the purpose is to um, look after the fees of the um, children. So the school fees will be paid if if they earn any income through the trust. Family trust is an intervivus discretionary trust. That is intervivus discretionary trust. I just discussed the intervivus trust. What is it? Can you Not paid by will, it is made by contract. Firstly, so that is it. It is established during the lifetime to manage certain assets or investments and support beneficiaries, as I just discussed. So आपने कभी किसी ट्रस्ट के बारे में सुना है जो कोई बड़े बिजनेस हाउसेस को मैनेज करता है? बिल गेट्स का ट्रस्ट नहीं, वो तो फाउंडेशंस है, वो अलग चीज हो गई। उनकी शेयर होल्डिंग वगैरह का आई डोंट हैव आइडिया, हो सकता है वो भी ट्रस्ट होंगे। इंडियन ग्रुप में कोई सुना है आपने कि हाँ ये ट्रस्ट के अंदर होल्डिंग है इस पर्टिकुलर ग्रुप की? जैसे टाटा ग्रुप है ना, तो टाटा ग्रुप की होल्डिंग्स जो है वो कई सारी कंपनीज की होल्डिंग दैट लाइज विद द टाटा ट्रस्ट। तो वैसे ही बहुत सारे बिजनेस हाउसेस दूसरे भी हैं जिनकी शेयर होल्डिंग जो है वो ट्रस्ट के पास है, न कि किसी इंडिविजुअल के पास या किसी कंपनी के पास। और फिर उस ट्रस्ट में जो डिविडेंड्स आते हैं, जो भी उस ट्रस्ट की इनकम आती है बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन दी रेस्पेक्टिव बेनिफिशियरीज। तो ये एक अच्छी प्लानिंग भी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस फॉर ए पर्टिकुलर फैमिली। तो उस ट्रस्ट में जितने भी लोग होंगे आगे जाके उसके बेनिफिशियरीज, उनको जिस बिजनेस में उस ट्रस्ट की शेयर होल्डिंग है उससे जो भी बेनिफिट होता रहेगा दैट विल गो टू दी ऑल बेनिफिशियरीज इन दी ट्रस्ट। तो ये क्या है कि एक तरीके से किसी भी फैमिली को आप ये मानो कि कुछ किसी तरीके के डिस्प्यूट्स नहीं हो, या फैमिली में अलग अलग, आज एक पर्टिकुलर पर्सन है उसके सपोज 4 बेटे हैं, है ना, और फिर आगे और सपोज ब्रांचेस आर देयर, एंड इनिशियली सपोज किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि इसकी शेयर होल्डिंग जो है वो ट्रस्ट में होगी, एंड जो बेनिफिशियरीज होंगे वो इस फैमिली के मेंबर्स होंगे। तो हाउ कन्वीनियंट इट इज टू सेटल द थिंग्स एट अ लेटर, कि जो भी डिविडेंड आ रहा है ऑटोमेटिक रेस्पेक्टिव फैमिली मेंबर्स में ट्रस्ट में आ रहा है और वो बेनिफिशियरीज के लिए यूज हो रहा है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फैमिली ट्रस्ट होने का एडवांटेज है, और इसकी बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग होती है कि जो ट्रस्ट डीड बनते हैं ये अपने आप में एक अच्छा खासा काम है। तो रिसेंटली वी हैव आल्सो बेसिकली ड्राफ्टेड सच ए डीड फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर फैमिली। तो उसमें जब हमने देखा तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। फिर इंस्टीट्यूट की गाइड आई तो वी थॉट दैट वी शुड एक्चुअली हैव दिस डिस्कशन आल्सो, क्योंकि आपको क्या होता है आप ट्रेनिंग के अंदर ऑडिट कर रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो, बट ये जो कई सारी चीजें है ना जो आपका, जैसे आज इनकम टैक्स ड्यूज की अपन ने बात करी या ये करी, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कई सारी चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, एंड यू कैन यूज इट in your professional life also. So family trust is an intervivus discretionary trust. Intervivus means the trust is created through trust deed. यही and कुछ लिखा हुआ ना discretionary- इसमें?
या कुछ और लिखा हुआ है जो मैंने बोला? Discretionary का मतलब होता नहीं, मैंने जो बोला वो है इसमें। है। हाँ वो तो था। तो श्योर एंश्योर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ अभी। ठीक है। And discretionary trust is that the amount of shares the beneficiaries are holding is not certain. It may be uncertain, and it will depend on the trustees on how much the beneficiaries should be benefited. Family trust is a vehicle independent of the author or beneficiaries, and therefore enjoys a relatively permanent nature and greater flexibility. As I said, the trustees have the authority on how much share should be given to the beneficiaries, so it is very independent. Now, what are the benefits of private and family trust? The prime benefits are that it is created for wealth protection, family succession planning, as sir now discussed that families create trust so that there are no disputes between family members, and asset transfer for the benefit of family members, both during and after the settler's lifetime. Here, the both during and after settler's lifetime is given because the interviewer's trust is during the lifetime of the settler, and the trust, discretionary trust, which is created through will, only comes into existence after the settler's lifetime. That's why both of the instances are given. Now, family trust also allows the settler of the trust to have complete control over the trust. How? He can include his power in the trust deed or in the will document, not in the will document, but in the trust deed, so that if any assets are sold, so he needs to be consulted before it. Such power can be enabled, and freedom to pass on the assets onto the beneficiaries. There is greater flexibility for appointment of trustees for managing and maintaining holding assets, and trustee may be appointed from any of the members, beneficiaries, family members, relatives of professional trustees. Now, what are the types of private trust? There are two types: specific trust, which may be non-discretionary trust, and discretionary trust. So, specific trust is generally those trusts where the amount of share which will be received by beneficiaries is known and is already written in the trust deed or will document. So, there will be no dispute regarding this. Thus, shares of beneficiaries are known and uncertain. Example of non-discretionary trust are: suppose an individual creates a trust for his family members and he has 4 children. So he will describe that all his 4 children will have 25% share of the profit or assets that they will receive in the future. So here he has expressly disclosed the amount of share that will be received by the beneficiaries. So this is not discretionary trust. And discretionary trust only decides the list of beneficiaries and not their share of proportion. As I have discussed it earlier regarding in relation with family trust, it is the same. It only gives the list of beneficiaries and not how much amount they will be receiving in future. It will only depend on in the hands of trustees, and they will take the decision according to the circumstances that arise in the future. Now we will be moving towards formation of interviews private trust. So private trust can be formed by trustee or will, and both have different process of formation. So in interviews private trust, settler first needs to give corpus amounts, which can be any amount, but the minimum amount that needs to be given by him is rupees 5,001. So that the trust can be formed. So as soon as the corpus amount is received by the trust, a trust is a trust deed is drawn up, wherein settler states that it is settling a private trust for the benefit of individuals, that is beneficiaries, and also he appoints the trustees by mentioning it in the trust deed, and it can be any number of trustees. There is no limit for appointment of trustees. Also, there can be even one sole trustee, and based on this trust deed, the trust is created, and then it can apply for PAN and open bank account in name of trust. So a trust deed has very important role in formation of interviewers trust. So we need to learn what trust deed exactly is.
So what is a trust deed? Trust deed is an instrument in writing executed by a settlor used to constitute a trust, thereby uh, defining the list of beneficiaries, their rights, also appointing the trustees, protectors, and also defining their power, control, and authority they will be having. So, what are the functions of a written trust deed? Written trust deed is prima facie evidence of existence of a trust. Since it is written and legalized, it, it clearly specifies that the trust exists and it facilitates devolution of trust property to trust. It means that how the settler devolves means transfers the trust property, his property to the trust, and how it becomes trust property. It specifies the trust objects. So it specifies for what objective the trust is being created. The written trust deed helps to control, regulate, and manage operations of the trust. It lays down the procedure for appointment and removal of trustees, and also it gives their how much power they have, what are their rights and duties, etc. It also describes course of action to be followed during dissolution of trust. Now, there is no specific format for trust deed, but it should contain some provisions which are very important in relation to existence of family trust. So the provisions it should contain are intention and objects of creation of trust, why trust is being created, name of beneficiaries for whom trust is being created, list of trust property and manner of transfer, that is the properties which is being transferred by the settler and how is it being transferred, the manner of distribution of trust property to beneficiaries, how in the future and after what time the trust properties will be distributed to the beneficiaries and what will be its process, the type of trust, whether it is discretionary or specific, or is it a family trust, and the manner of dissolution, the manner in which trust will be dissolved in future if any circumstances arises. It should also no specific format, but generally the following format is being used by all the CAs to create the trust. And it first begins with name of the trust. It should disclose what is the name of trust, and the name should be such that it is self-evident to disclose the primary objective of the trust. So basically, if it is suppose in relation to the any family, so I think it should create some family name also. और how does the name are there? जैसे अभी टाटा ट्रस्ट की बात करते हैं यहाँ, अभी टाटा तो ट्रस्ट जनरली उसका फैमिली का नाम ही उसमें होता है. रहेगा अच्छा ये for the purpose of yes beneficiaries must be so and so family. So after the name of trust is mentioned, the name of settler, trustees and beneficiaries should be mentioned. Their name, their proof ID, address, occupation which they are carrying, all should be mentioned. And it should also contain the corpus contribution given by the settler. And then the working area of trust should be mentioned, where the where the operations will be taking place, its area of operation, the existence of property, where is it, all should be mentioned. If it is a with rather if it is a specific city, village, or state, or whole of India, then the objects of trust should be mentioned. It is the main clause. Why is it being created? For what purpose? What will be the benefits received by the beneficiaries? And mainly the benefits that are received are for well-being of family members or relatives who are relying on the settler. So the primary objective should be disclosed. Also, the objectives which are general, they should also be disclosed. And objects which are unlawful are are void ab initio, means trust which is created with unlawful objects, then it is void. And if if there are two objects of a trust and one is lawful but other one is unlawful and they both are interrelated and cannot be separated, then the whole trust is void of initio.
Then the duties and powers of managing trustees should be mentioned. What are the minimum number of managing trustees and maximum number? What are the rights and duties of managing trustees? And who are the person who can be appointed as trustee? So, person who is competent to contract. Can anyone tell me who is a person who is competent to contract? Yes, sound-minded. No disqualified by law. Yes, who is a major. So they can all be appointed as trustees. And generally, trustees are family members, as the benefit is for the family itself. And then the residuary clause is included. Details which were not covered above is included in this clause. And mainly the source of income of trust, how the trust will earn, details about financial year of trust, and properties given by settlers. These all are included in the residuary clause. Then the dissolution clause is being included in the trust deed. Whether the private trust can be dissolved, whether it is revocable or irrevocable. So, if it is revocable, it can be revoked only after the consent is being obtained by all the beneficiaries, where beneficiaries are competent to contract, where they can enter the contract. So, primary condition for dissolution of trust is that the power of revocation should be mentioned, and it should be expressly referred in the trust deed. So, when can be trust dissolved? What are the circumstances where the trust can be dissolved? Where the expiry of specified period in the trust is over, it is completed. Where the purpose for which trust was created becomes unlawful. Suppose the government of Rajasthan brings a law that alcohol is banned from Rajasthan, and if the trust was created with the business purpose of selling alcohol, then as soon as the law comes into action, then the purpose for trust becomes unlawful, and it will get dissolved. When all the next scenario is when all the trust properties are destroyed. Then, if the object for which trust was created is fulfilled, is completed, then the trust is also dissolved where the trust properties are not used for the purpose for which the trust was created. And also, if the settler is expressly revoked by the settler with consent of beneficiaries, means if the settler revokes the trust by taking the consent of all the beneficiaries, then also he can dissolve the trust. At the end of the trust deed, the signature of settler, trustees, and witnesses, which may be two. So, two witnesses and settler and trustees. These all signatures should be there at the end of the pages of all the trustees. Moving forward, we will be discussing about formation of testamentary trust, that is trust created through will. क्या हो गया, थक गया क्या एक टॉपिक करके? हैं? मैं तो कभी पहले नहीं देखा इसका। क्या? इसका जी हुआ था। इसका तेरे को डिफरेंस में तो अभी तो सुन ले, जानते हैं? क्या अभी तेरे इनकम टैक्स ड्यूज ही घूम रहा है? अरे कोई बात नहीं, रात को तेरे को तैयारी करने में सोया नहीं तो अच्छी बात है ना, हैं? तैयारी ऐसी होनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि साहब मैंने तैयारी कर ली और रात को 10 बजे आराम से सो रहे हो, है ना, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। टॉपिक नया है और आपको नींद कैसे आ रही है? तो ये रात को सोया नहीं तो सोने तो इसको तो क्या करें, हैं? कोई बात नहीं, चलो। इसका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे को? आ रहा है? कुछ 2-3 सवाल। तेरा नाम राशि है तो अच्छे से, और मेरा जाति राशि है। So, testamentary trusts are trusts which are created through will documents, and it is internationally recognized as favored vehicles for estate and succession planning. So, a will document is created so that his children or his family members all are all are so that all his children family members can receive the benefit which he has. So,
it is this type of trust is effective only upon the death of the testator, that is the settler who is creating the will, and it takes time only after the death of settler. So he is free to make any changes, he is free to amend any changes in the trust during his lifetime. And this change in the will can be made through a document named codicil or by executing a new will. In case of executing a new will, the old will should be destroyed completely. And if the old will is being amended, then codicil should be used. And in this scenario as well, a person who is competent to contract, he can make a will and so on, create a trust. What are the details to be incorporated in will trust? The first detail is that it should incorporate his intention why he is creating the trust under will. So that so the intention should be expressed and it should not be inferred. Why it should be expressed? So that there is no dispute, there should be no ambiguity in the language which can create dispute. So it should be clearly expressed. And then the object for creation of trust should also be clearly expressed. Why is it being created? Mainly it is created for the maintenance of family, and for it can also be created for meeting the educational expense of his children. Then it should incorporate the detail of the beneficiaries. Who are the beneficiaries? He should clearly identify them with reasonable certainty. And then he should also mention the trust properties which he is going to transfer through the will. And trust properties should also be identified with reasonable certainty. It is the subject matter of the trust, and it can be investment, cash, or any other movable assets. And the most notable point here is that the settler can only transfer his own property. He cannot transfer any ancestral property. तो जो भी आपको आपके बड़े लोगों से मिला हुआ है तो आप उसे नहीं बेच सकते. He can only transfer his own property. That's the notable point which very few people know. आप समझ रहे हैं ना कि सपोज उसको लीगेसी कहीं से मिल रहा है तो उसको वो सेटलर कैन नॉट सेटल. वो तो फिर जो भी रेस्पेक्टिव लॉज है जैसे हिंदू लॉ में सक्सेशन में अगर आ रहा है तो वो कैसे होगा, वो उस तरीके से तो वो उसने जो खुद ने जो कमाया है खुद के थ्रू जो चीजें आई है उसको वो सेटल कर. Now, as soon as the will is created, it comes into existence only after probate process is being completed. So, what is probate process? It is a judicial process to legalize the document. It is taken into the court and then it comes into existence. Now, as we have understood what an interviewer's trust is and what a testamentary trust is, and what is the process of formation of both, it is also important to identify the key differences. So, the interviewer's trust is transferred to the trust during his lifetime, during the lifetime of settler, and therefore the settler cedes the control, that is, loses his control over the property which he had belonged, because the same is being transferred to the trust. Whereas in testamentary trust, the property only goes to the trust only after the death of the settler. So he is the owner during his lifetime, and he has complete control over the trust, over the property which he is transferring to the trust. And in inter vivos trust, the settler may exercise some degree of control over the functioning of trust. How? He can include a clause in the trust deed in order to give him some power, in order that if the asset is being sold, then the concern needs to be taken. If any major uh, if any major functioning of the trust is being happening, then the concern needs to be taken. Whereas in testamentary trust, settler is unable to exercise any control over the trust, over the functioning of trust, because the trust only comes after the death of settler. In inter vivos trust,
The trust once created may only be revoked if it is a revocable trust. Means if the trust is means if in the trust deed it is clearly explicitly mentioned that trust is revocable, only then it can be revoked by the trustees by taking the consent of all the beneficiaries if they are competent to consent. Whereas in testamentary trust, trust may be revoked by testator's wish, that is settlor's wish, anytime as trust is not being is not in the existence, and he can simply amend or destroy the will during his lifetime. Now the formation of ha- private trust has been completed in both the scenarios, and its registration is not compulsory, but it is advisable so that there are no disputes in the future. So the registration process in both types of trust are similar, and after the creation of trust, application for registration of private trust should be, which is in writing, should be submitted to the office of local registrar. So the local registrar then receives the trust deed of will, whichever is the case, and such application should be filed within the prescribed time of creation of trust and should be filed with fees prescribed. And the, the fees can be applicable fees can be obtained from the office of local registrar, and also the form for registration of trust can also be obtained from the local registrar. List of documents required for registrar for registration of private trust. It needs request letter, trust deed, on stamp paper of requisite value or will document, as the case may be. One passport size photograph and self-attested copy of proof of identity, which may be Aadhaar card, PAN, license, any of these, of all the settlers and each of the trustees. It also needs self-attested copy of PAN card of all settler and non-trustees. It also needs proof of registered office of the trust. If the trust doesn't have any registered office, then it needs no object letter from the landowner. Then it also needs signature of settler on each pages of trust deed or will document and signature of two witnesses in on the trust. After receiving the form of registration from the settler, the registrar processes the application. It generally takes 7 days for the same, and in the process of in the process of processing the application, registrar usually inquires what is the purpose of ascertaining, and in this he can ask whether a trust exists, he can ascertain whether a trust exists, and whether such trust is a private trust, and he can ascertain whether any property is the property of such trust, means the property कोई fake होगा तो नहीं, किसी और की तो नहीं, उनके नाम की है, and whether the whole or substantial portion of subject matter of trust is situated within his jurisdiction, means the power he is having, the um, the land he is having, whether the trust is situated in his own land where he has the power to control all these things, and what are the names and addresses of the trustees and the managers of such trust, what is the mode of succession of to the office of such trustee, and the amount of gross average annual income and expenditure of such trust, and any other particulars as he may feel important, he may ascertain the same. And after making the inquiry, if he feels that the everything is correct and everything is in good will, then he may make an entry in the register and then issue registration certificate containing official seal and registration number of the trust. And through this process, the formation of private trust takes place and also the registration of private trust takes place. Thank you. So we will now discuss the taxation of Yes. private and family trust. About public trust, उससे पूछ तो ले बताया कि पब्लिक ट्रस्ट का जो लॉ होगा उसको चेक करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट
But अगर public trust is made for the benefit of whole country, उसके अंदर disputes नहीं आएंगे, किसी state का law कुछ अलग हो, दूसरे state का law अलग हो. उसमें जनरली जैसे मान लीजिए कि जो भी ट्रस्ट बन रहा है, एक तो पहले उसका मेन रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ, आप समझ रहे हैं ना? ऐसा तो है नहीं कि एक ही ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन 10 जगह हो जाएगा, तो वो प्लेस ऑफ कहीं एक ही जगह होगा ना, ऐसा तो है नहीं, तो उस स्टेट्स के लॉ लगेंगे। अब उसकी अलग अलग जगह जहाँ पे भी होगा वहां पे उसके या तो ऑफिस होंगे या कुछ ब्रांच होगी, वो सब चीजें होगी, तो अल्टीमेटली लॉ विल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। It still suppose there are anything, though I am not confirmed, but I think if suppose something is not governed by the respective state law, then the Indian Trust Act 1873 should come into picture. So I am not very sure about this, but it can be examined. The national law भी है कोई, Section 8 of the Companies Act में detail. नहीं वो तो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर वो कंपनी है, वो ट्रस्ट नहीं है, दैट इज द कंपनी, दैट इज कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। यस, So, good evening everyone. I'll be covering taxation of private and family trust. तो जैसे हर्ष ने अभी आपको पूरा समझाया फॉर्मेशन, तो उसमें से मेरे को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए होगी। एक तो उसके टाइप्स, जैसे इसमें दो टाइप्स के बताया, एक तो प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट एंड प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। तो कोई बता सकता है इन दोनों की इसने क्या बेसिक डेफिनेशन क्या बताई थी, प्राइवेट स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिशनरी की? पर्टिकुलर शेयर फिक्स होता है 25% इन्होंने बताया था 6 वो नंबर किसमें होता है? नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब स्पेसिफिक अपन ठीक है, ओके। और डिस्क्रिशनरी में और ऐड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोपोर्शन डिसाइड ही नहीं होता, वो लेटर ऑन जाके डिसाइड होता है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अपन इनकम टैक्स एक्ट जो अपना उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 है, सॉरी क्लॉज 31, वो पर्सन की डेफिनेशन डिफाइन करता है। उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेटस आते हैं वो सब कवर होता है, बट वो प्राइवेट ट्रस्ट का जो स्टेटस है वो डिफाइन नहीं करता है। तो सेक्शन 2 सब clause 31 of the income tax act define persons, but status of private trust is not defined under section 2 clause 31 of the income tax act. Trust is an obligation and not a distinct legal person in the eyes of law. ये एक लीगल स्टेटस नहीं गेन करता है ट्रस्ट। इसका स्टेटस मैं आगे लेकर कवर करूंगा, इसका स्टेटस किस बेसिस पे डिफाइन होता है। प्राइवेट ट्रस्ट आर रिप्रेजेंटेटिव assessee acting on behalf of beneficiary, which is what is taxable in the is the income of beneficiary and not received by the trust on behalf of the beneficiary, thus a trust is not taxable. ट्रस्ट टैक्सेबल नहीं होती है, बेसिकली जो बेनिफिशियरी के हैंड्स में जो भी इनकम आ रही है वो टैक्सेबल होती है ट्रस्ट के हाथ में। मतलब एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट बेनिफिशियरीज को। तो ट्रस्ट टैक्सेबल नहीं होती, बेनिफिशियरीज टैक्सेबल होते हैं बेसिकली जो अपन बोलते हैं। मोreover the liability to pay tax in a representative capacity is on the trustee and not on the trust. तो जब जैसे अपन ने बोला रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेट करता है ट्रस्ट बेनिफिशियरीज को, तो उसकी टैक्स पे करने की लायबिलिटी किस पे आती है? वो आती है ट्रस्टीज पे ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशियरीज। ये कुछ सेक्शंस हैं जो अपन ट्रस्ट के टैक्सेशन में अपन को काम आएंगे। 48 आपको पता होगा जो अलाउएबल एंड डिसअलाउएबल डिडक्शन जिसके अपन कंसीडर होते हैं। 56 अपना अदर इनकम का, बट इसमें मेनली एक सेक्शन काम आता है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 दैट इज ऑफ गिफ्ट। सेक्शन 60 इसमें आपने ये कुछ सेक्शन है 60 to 64 ये आपने इंटर लेवल पढ़े होंगे, बट उसमें भी ट्रस्ट का पॉइंट आता है, बट अपन को उस टाइम तक क्लियर नहीं होता है। आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे वहाँ पे ट्रस्ट जो मेंशन होता है वो किस लिए होता है। तेरे को भी पढ़ने से क्लियर हुआ या पहले ही हो गया? नहीं सर, पढ़ने के बाद हुआ। पढ़ने के बाद हुआ ना। तो इसके फाइनल के एग्जाम का एक 10 नंबर का सवाल आ गया ये, है ना? 10 नंबर मायने रखते हैं फाइनल में, बहुत ज्यादा हैं? बहुत ज्यादा रखते हैं। यस सर। तो बस सेक्शन 60 किस चीज का होता है? वहाँ पे अपन ट्रांसफर्स जो होता है कि जहाँ पे विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट अपन कोई भी उसकी इनकम होती है ट्रांसफर कर देते हैं अपन किसी और को। 61 होता है रिवोकेबल ट्रांसफर्स का। 62 अपना इरिवोकेबल ट्रांसफर। 63 इज द डिफाइन द ट्रांसफर एंड रिवोकेबल ट्रांसफर। 64 जो अपना क्लबिंग का प्रोविजन है। एंड फिर ये कुछ नए सेक्शंस हैं जो प्राइवेट ट्रस्ट के टैक्सेशंस को डील करते हैं। 160 to 166 यहाँ पे 160 रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को डिफाइन करता है।
161 उसकी लाइबिलिटी बताता है. Basically 161 deals with the taxation of private specific trust, and 164 deals with the taxation of trust where beneficiaries are unknown, basically private discretionary trust. And 166 इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अपने ट्रस्ट के टैक्सेशन है वो कोई भी सेक्शन के द्वारा प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, मतलब जो ट्रस्ट पे टैक्सेशन होगा वो होगा. तो अपन शुरू करते हैं टैक्सेशन ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट. द टैक्सेशन ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 162 164 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. The taxation of private trust depend upon the type of the trust and activities carried on by the trust. मतलब उसका कि वो स्पेसिफिक, मतलब बेसिकली जो टैक्सेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो स्पेसिफिक ट्रस्ट पे और एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट पे. इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रस्ट हो गई, मतलब है ना सेटलर ने ट्रस्ट बना दी बट उसने कुछ राइट्स रिटेन करे कि वो उस ट्रस्ट को कभी भी रिवोक कर सकता है. तो द ट्रांसफर इज रिगार्डेड एंड द इनकम इज कंसिडर्ड इन द हैंड्स ऑफ सेटलर और द ट्रांसफर ओनली. मतलब वो फिर उसमें जो भी इनकम होगी वो सेटलर के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी, मतलब एक तरह से क्लब हो जाएगी, क्योंकि रिवोकेबल ट्रस्ट है, उसने अपने पास राइट्स रिटेन करे हैं. तो वो जो भी इनकम होगी वो ना ट्रस्ट के हाथ में हैंड्स में टैक्सेबल होगी ना बेनिफिशियरीज के हैंड्स में, वो सेटलर के हैंड में ही जाके टैक्सेबल होगी. हेंस द एंटिटी ट्रस्ट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सेपरेट टैक्स एंटिटी इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रस्ट, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 60. Only irrevocable trusts are governed by the provisions of section 160 to 164 of the income tax act. तो सेक्शन 161 रिप्रेजेंटेटिव असेसी इसके अंदर मेंशन हुआ है. इसके अंदर एक स्टेटमेंट है, every representative assessee as regards the income in respect of which he is a representative assessee shall be subject to the same duties, responsibilities and liabilities as if the income received by or accruing to or in favor of him been beneficially, and shall be liable to assessment in his own name in respect of that income, but any such assessment shall be deemed to be made upon him in his representative capacity only, and the tax shall subject to the other provisions contained in this chapter shall be levied upon and recovered from him in like manner and to the same extent as it would be levied upon and recoverable from the person represented by him. Law language, so bit typical. In simplicity इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी ट्रस्ट है वो एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी के तौर पे बिहेव करेगी. उसके अंदर जो भी वो उसके ऊपर उसकी जो भी लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ट्रस्ट डीड में ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी होगी. तो उसका जो भी असेसमेंट होगा वो होगा ट्रस्टी का या फिर ट्रस्ट का जो भी अपन बोले, बट वो होगा किसके बिहाफ पे, बेनिफिशियरीज के बिहाफ पे. तो इसमें दो वर्ड्स मैंने हाईलाइट करे हैं या फिर दो फ्रेज आप बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव असेसी एंड इन द लाइक मैनर टू द सेम एक्सटेंट. इसको अपन अब समझते हैं. इसका क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है सेक्शन 160 में. Representative assessee as defined in section 160 subsection 1 clause 4 and 5 as regard the income in respect of which the trustee is a representative assessee only for the income which is derived from the property held under trust. Accordingly, the personal income of the trustee will be dealt separately for determining taxable income and filing of income tax return. Even for his individual income, the status may be different from representative assessee. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टी है उसकी जो खुद की पर्सनल इनकम होगी वो एकदम अलग सेपरेटली ट्रीट होगी उसकी खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में, बट जो ट्रस्ट की इनकम होगी वो अलग से एज अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी उसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी. सेक्शन 160 स्पेसिफाइज दैट अ ट्रस्टी ऑफ द क्या हुआ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या क्या बताया अभी उसने लास्ट 5 मिनट में? 5 मिनट तो तूने 2-5 वर्ड ही नहीं बोले यार, हैं? क्या तनीसा? ट्रस्ट का जो ओनर टाइप होता है उसको अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो टैक्स पे करना ही है, साथ में जो ट्रस्ट पे जो भी टैक्स लेवी होगा वो भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में टैक्स पे करना है. और कोई नई चीज बताई? स्पीकर्स को तो भूल ही जाओ, ये तो सुन ही नहीं रहे होंगे, तो क्या तैयार कर लिया वही बहुत है. ठीक बोला इसने? बट ओनर नहीं, ट्रस्टी जो उसकी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है. ओनर तो सेटलर हो गया जिससे क्रिएट किया है. सेक्शन 160 स्पेसिफाई दैट अ ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट विल बी टैक्स एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी. अब इसमें
रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, इसने जैसे बोला कि उसको लीगलाइज करना एडवाइजरी है बट कंपल्सरी नहीं है, तो अगर ओरल कैपेसिटी में हो रहा है तो वो तो सेक्शन 160 सब सेक्शन में क्लॉज 5 में कवर होता है, और रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में अगर ट्रस्ट क्रिएट हुई है तो सेक्शन 160 सब सेक्शन में क्लॉज 4 में कवर होता है। सेकंड फ्रेज इज द इन लाइक मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट। अब इसका क्या मतलब है, इसका ऐसा है, द consequences that follow from the proposition laid down in section 21 subsection of the wealth tax act by the apex court as given above, that the trustee is assessable in the like manner and to the same extent as the beneficiary are. There would have to be as many assessments on the trustee as there are beneficiaries with determinate and known shares, though for the sake of convenience there may be only one assessment order specifying separately the tax due in respect of the wealth of each beneficiary. मतलब उस ट्रस्ट में जितने बेनिफिशियरीज होंगे उतने ही असेसमेंट ट्रस्टी के ऊपर लेट डाउन किए जाएंगे, उतने ही ट्रस्टी के असेसमेंट्स होंगे, बट उन सब असेसमेंट्स के लिए सिर्फ एक असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। असेसमेंट जैसे बेनिफिशियरीज 4 है तो उसके ऊपर 4 असेसमेंट होंगे, बट चारों असेसमेंट का सिर्फ एक असेसमेंट ऑर्डर पास होगा। The assessment of the trustee would have to be made in the same status as that of the beneficiary whose interest is sought to be taxed in the hand of the trustee. The जो बेनिफिशियरी का स्टेटस होगा वही ट्रस्टी का स्टेटस मान के उसके ऊपर असेसमेंट किया जाएगा। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल। So the the amount of the tax payable by the trustee would be the same as that payable by each beneficiary in respect of his beneficiary interest if he were assessed directly. इस थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर बेनिफिशियरी अगर रिप्रेजेंटेटिव असेसी नहीं होता तो जैसे बेनिफिशियरी टैक्स जो बेनिफिशियरीज के ऊपर टैक्स बनता वही टैक्स ट्रस्टी को पे करना पड़ेगा। However, maximum marginal rate is the now taxation of private specific trust. The taxation of private trust is governed by the section 161 to 167 of the Income Tax Act. Particularly section 161 deals with the taxation of private specific trust. For private specific or non-discretionary trust, when share of individual beneficiaries are determined, the share of all beneficiaries are liable to be assessed either by the trustees as representative assessee or directly in the hands of beneficiaries entitled to income. If income of such trust does not consist of profits and gains from business or profession, tax is leviable on the total income of each beneficiary. इस पॉइंट का मतलब ये है, अगर उसमें कोई भी पीजीवीपी बिजनेस एंड प्रोफेशन की कोई भी उसमें प्रॉफिट और गेन की कोई भी इनकम नहीं है तो उसके ऊपर जो नॉर्मल स्लैब रेट का अपना टैक्स लगता है उसके ऊपर वही टैक्स लगाया जाएगा। If income of such trust consists of profit and gain from business or profession, tax is chargeable at maximum marginal rate. और अगर उसके अंदर बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो उसके ऊपर एमएमआर की रेट लगेगी। However, as provided under section 161 subsection 1A of the Act, maximum marginal rate is not applicable where profits and gains are receivable under a trust declared by any person by will exclusively for the benefit of any relative dependent on him for support and maintenance, and such trust is the only trust so declared by him. अब ये section 161 subsection 1A क्या बोलता है, इसमें ये है कि MMR की जो रेट है वो ट्रस्ट पे, अगर ट्रस्ट की इनकम बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम आ रही है फिर भी एमएमआर की रेट तब नहीं लगेगी जब वो ट्रस्ट सेटलर के किसी रिलेटिव के लिए बनाई गई है जो उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, और दूसरा वो ट्रस्ट इज द ओनली ट्रस्ट डिक्लेयर्ड बाय द सेटलर, मतलब वो इकलौती ट्रस्ट जो सेटलर ने बनाई है, तब एमएमआर की रेट नहीं लगेगी। नाउ टैक्सेशन ऑफ रिवोकेबल ट्रस्ट. For the taxation of revocable trust, provisions of section 60, 61, 62 and 63 of the Act of Material, जो अपने revocable transfers और उसके sections है. Section 60 provides for transfer of income where there is no transfer of asset. It stipulates that all income arising to any person by virtue of a transfer, whether revocable or not effected before or after the commencement of Act, would where there was no transfer of asset from which rose income chargeable to income tax, such income of the transferor should be included in his income. मतलब उसने कोई एसेट ट्रांसफर नहीं किया बट उसमें उस एसेट में से कोई भी इनकम हो रही है वो उसने ट्रांसफर कर दी ट्रस्ट को,
तो वो इनकम सेटलर के हैंड्स में ही जाके टैक्सेबल होगी, ट्रस्ट पे टैक्सेबल नहीं होगी। Section 161 provides for the inclusion of the income of the trust in the hands of the settler in case the trust is a revocable trust. रिवोकेबल ट्रस्ट के केस में जो अगर ट्रस्ट रिवोकेबल है, मतलब सेटलर ने राइट्स रिटेन किए उस ट्रस्ट को रिवोक करने के लिए, तो सेक्शन 61 ही बोलता है तो तब भी जो इनकम ट्रस्ट को होगी वो सेटलर के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी। सेक्शन 62 प्रोवाइड्स एक्सेप्शंस इन सर्टेन केसेस टू 61 के एक्सेप्शंस देता है 62 की 62 में इररिवोकेबल ट्रांसफर की बात की जाती है। This section provides that the provision of section 61 shall not apply to any income arising to any person by virtue of a transfer by way of trust which is not recoverable during the lifetime of the beneficiary, and in case of any other transfer which is not revocable during the lifetime of the transferee, provided that the transferor derives no direct or indirect benefit from such income. मतलब उसने कोई भी राइट रिटेन नहीं किया हो वो ट्रस्ट रिवोक करने का, दूसरा उस इनकम से ट्रांसफरर या फिर सेटलर खुद कोई भी बेनिफिट नहीं ले रहा, तब वो जो इनकम है वो ट्रस्ट के हैंड्स में, मतलब बेनिफिशियरीज के हैंड में टैक्सेबल है। Section 63 makes a provision for cases wherein a transfer shall be deemed to be revocable. Sorry. Section 63 makes a provision for cases wherein transfer shall be deemed to be revocable. यहाँ पे deemed revocation के cases आ जाते हैं. In case of revocable trust, assets can be withdrawn from the trust. Hence, income of the trust is taxed in the hands of settler at the slab rate. जहाँ पे revocable अपन बात करें कि revocable होगी तो उसकी normal जो settler की slab rate उस पे लगती है, उसी में वो income taxable होगी. Yes, ये point पड़ा कि settler को direct या indirect benefit नहीं होना चाहिए. क्योंकि settler एक trust के through इस property का rent मेरी wife के benefit के लिए use होना चाहिए. अगर अपन normal clubbing के provisions से जाएंगे तो मेरे उनके income में taxable होगी. But अगर मैं उसी की जगह trust लगा दूँ बीच में, तो वो same income मेरी wife की income मिल जाएगी. वो मैं आगे कवर करने वाला हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. As provided under section 63 of the Income Tax Act, a transfer shall be deemed to be revocable. एक बार किसी सवाल का जवाब नहीं आता ना, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है. मैं बता रहा हूँ एज ए स्पीकर we'll see it. है ना, फिर वो दो मिनट बाद में या बाद में आधे घंटे बाद में आप थोड़ा दिमाग लगा के और सोच लो कि क्या आंसर होना चाहिए, है ना, और या फिर वो स्किप हो जाएगा, वो भी भूल जाएगा, तुम भी भूल जाओगे. ये एक अच्छे स्पीकर की क्वालिटीज है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए. चलो सेक्शन 63 में जो भी डीम्ड रिवोकेशन के केसेस आते हैं उसमें उसको अपन रिवोकेबल कब मानेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स है. फर्स्ट, इट कंटेन्स एनी प्रोविजन ऑफ द डी ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम और एसेट टू द ट्रांसफर. मतलब कोई भी उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन है कि इसकी जो भी इनकम आ रही है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेटलर को बेनिफिट देगी, मतलब उसी के पास चल जाएगा, तो ये रिवोकेबल माना जाएगा. दूसरा, इट इन एनी वे गिव्स द ट्रांसफरर अ राइट टू रीअज्यूम पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और असेट. मतलब असेट या इनकम पे पार्ट पे या फिर पूरी इनकम पे अगर ट्रांसफरर कोई भी राइट रिटेन करता है उसको अपने रीअज्यूम करने के लिए, मतलब वापस लेने के लिए, तो भी ये ट्रांसफर रिवोकेबल माना जाएगा. नाउ टैक्सेशन ऑफ प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट. डिस्क्रिशनरी मतलब यहाँ पे शेयर डिफाइन नहीं है. सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. बिफोर कमिंग टू दिस, सॉरी, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. अगर अपन ने स्पेसिफिक ट्रस्ट बनाया, से एक मिनट यहाँ पे जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी सुन लें, और इफ समवन वांट टू रेज द हैंड्स दे कैन रेज हैंड्स, अदरवाइज आई विल आस्क टू रिप्लाई. मेरा क्वेश्चन ये है, अपन ने स्पेसिफिक ट्रस्ट बनाया जहाँ पे शेयर डिफाइन है, फैमिली के लिए बनाया. फैमिली में सपोज बेनिफिशियरीज थे उनकी वाइफ और उनके 2 चिल्ड्रन, सॉरी 1 चिल्ड्रन सपोज. अब अगर उसमें उनका इन फ्यूचर एक और शेयर डिफाइन था 50-50% नॉर्मल, ठीक है, और अगर फ्यूचर में अगर उनको एक और वुड बी बॉर्न बेबी अपन इसको बोले, अगर एक और बच्चा होने वाला है तो क्या वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा या नहीं होगा? स्पेसिफिक ट्रस्ट
आपको include ट्रस्ट की नहीं, करना बेनिफिशियरी। है, सॉरी बेनिफिशियरी को इंक्लूड करना है। तो नया बच्चा है। तो जो करंट ट्रस्ट वो है पार्टिसिपेंट की परमिशन लगेगी ना। कोई और लैंग्वेज में हो सकता है कि फॉर माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन टू हैव इक्वल शेयर। तो अगर वुड बी बॉर्न बेबी है तो उसको अपने आप इक्वल शेयर मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन। कोई और जवाब दे रहा है? गिनी शर्मा, गिनी शर्मा, आर यू देयर? गर्व मुरार का गर्व मुरार का लक्ष्य नाहर, कोऑर्डिनेटर्स कौन है अभी यहाँ पे? ये तीनों के नाम नोट कर लेना, गर्व मुरार का, गिनी और यस सर। क्या हो गया गिनी तेरे को? तू तो यहाँ से गायब हो गई। अरे सर वो थोड़ा नेटवर्क इशू था तो मैं अनम्यूट ही कर रही थी, जब से हो ही नहीं रहा था, अब जाके पता पड़ा था। अच्छा, तो सुनाई तो दे रहा ना तेरे को? हाँ सर, एक बार रिपीट कर दीजिए क्योंकि नेटवर्क इशू था। चलो अभी ये रिपीट करेगा, हमारे कौन बनेगा करोड़पति का सवाल करेंगे। हाँ बता। मेरा क्वेश्चन ये था कि अपन प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट में जिसमें बेनिफिशियरीज का शेयर डिफाइन होता है, उसमें अगर अपन एग्जांपल ले कि सेटलर ने अपनी वाइफ और उसके चिल्ड्रन के लिए ट्रस्ट बनाई, उसमें बेनिफिशियरी उसकी वाइफ है और उसका एक चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड है सॉरी। तो अगर उसमें उसका एक और बेबी होने वाला है तो क्या वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा? डिपेंड करता है। एक बार और बोलना, क्या बोला? वो जो चिल्ड्रन हुआ है वो इंक्लूड होगा कि नहीं? हाँ, डिपेंड करता है, मतलब शायद नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। चलो हो जाएगा गर्व मुरार का जहाँ क्या? तक सर, इंक्लूड तो हो जाएगा जहाँ तक है, कंफर्म नहीं हूँ बट मैं सॉरी। चलो और कोई जवाब देने वाला है? गर्व मुरार का सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा तुम्हें? चलो गर्व और नाहर का जो है मेरे को आप जवाब नोट करना, तो दे विल बी देयर इन दी, दे विल मीट मी। सो यस, नाउ यू कंटिन्यू। और गिनी को भी आंसर दे दो भाई, उसको बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। आंसर करेक्ट है। वो इसमें दोनों वुड बी वाइफ और अगर कोई अनमैरिड है तो उसकी वुड बी वाइफ और वुड बी सन दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। वुड बी वाइफ भी और वुड बी सन। मतलब कोई कोई किसी की मैरिज भी नहीं हो और बाद में अगर उसकी मैरिज हो रही है तो उस ट्रस्ट के हिसाब से जब कभी भी उसकी मैरिज होगी तो जो उसकी वाइफ होगी शी विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दी, इंक्लूडेड एज ए बेनिफिशियरी, और आगे भी उनके बच्चे होंगे तो वो भी इंक्लूडेड होंगे। Now, we talk about taxation of private discretionary trust. Discretionary trust मतलब जिसमें share define नहीं। Section 164 subsection 1 of the Income Tax Act deals with the taxability of the private discretionary trusts. It sets out how tax shall be charged in case of discretionary trust.
This section provides that any income which is not specifically receivable on behalf of or for the benefit of any person, or where the individual shares of the person or whose behalf or for whose benefit such income or such part thereof is receivable are indeterminate or unknown, the tax shall be charged at maximum marginal rate. मतलब simple, जहाँ पे उनका शेयर डिफाइन नहीं है, इंडेटरमिनेट है या फिर अननोन है, तो वहाँ पे जो भी इनकम होगी वो एमएमआर पे टैक्सेबल होगी. The income of the trust having profit and gains from business or profession, whole income is taxable in the hands of trustee at maximum marginal rate, except when the trust declared exclusively for the benefit of a relative dependent, and if the trust is only trust declared by him. सेम जो स्पेसिफिक में था, अपन अगर प्रॉफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन के अगर कोई भी इनकम आ रही है तो वो ट्रस्टी के हैंड में एमएमआर पे टैक्सेबल होगी. एक एक्सेप्शन है, अगर वो ट्रस्ट डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए बनाई गई है और दैट्स द ओनली ट्रस्ट डिक्लेयर्ड बाय द सेटलर. When share of individual beneficiaries are indeterminate, trustees are liable to tax as a representative assessee. मतलब representative capacity में trustee taxable होगा. However, maximum marginal rate is not applicable in the following cases, and income will be chargeable as if it were income of association of person. अब यहाँ पे ये कैसा आता है कि एमएमआर पे चार्ज टैक्सेबल नहीं होगी, वो ट्रस्ट को अपन ट्रस्ट ना मतलब ट्रस्ट का जो मैंने बताया स्टेटस बेनिफिशियरी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बेनिफिशियरी इंडिविजुअल है तो ट्रस्ट भी इंडिविजुअल हो जाएगा. बट यहाँ पे उसका स्टेटस ही अपन एओपी मान लेंगे, तो फिर उसके हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी. तो इस ये कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पे अपन उसको एओपी मान लेंगे, where none of the beneficiaries have any other income chargeable to tax under the Income Tax Act and none of the beneficiary is a beneficiary under any other trust. जहाँ पे बेनिफिशियरी की उस ट्रस्ट के अलावा कोई और इनकम नहीं है और वो बेनिफिशियरी कोई दूसरी ट्रस्ट में भी बेनिफिशियरी नहीं, मतलब वो सिर्फ एक ही ट्रस्ट है जिसमें वो बेनिफिशियरी है और उसकी जो भी इनकम हो रही है वो सिर्फ उस ट्रस्ट से ही हो रही है, उसके अंदर कोई भी और अदर इनकम नहीं है. Where the relevant income or part of relevant income is receivable under a trust declared by any person by will, and such trust so declared is only trust so declared by him. तो जो इनकम जो भी रिसीवेबल है ट्रस्ट को, वो ट्रस्ट एक सेटलर के द्वारा विल से बनाई गई है, मतलब टेस्टामेंटरी ट्रस्ट है. दूसरा वो दैट्स द ओनली ट्रस्ट दैट इज डिक्लेयर्ड बाय हिम. थर्ड पॉइंट, वेदर ट्रस्ट इज अ नॉन टेस्टामेंटरी ट्रस्ट, मतलब विल से नहीं बनाई गई, या तो ट्रस्टी से या फिर ओरल. Whether trust is a non-testamentary trust created before March 1970 for the exclusive benefit of relatives of a settler mainly dependent on him for their support or maintenance, or where settler is a Hindu undivided family for the exclusive benefit of its members so dependent upon him. मतलब settler एक HUF है यहाँ पे, उस पे और उसमें जो भी मेंबर्स हैं मतलब बेनिफिशियरीज हैं वो उस सेटलर पे डिपेंडेंट है, मतलब HUF पे डिपेंडेंट है, और या फिर कोई रिलेटिव है जो कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट है, और ये नॉन टेस्टामेंटरी ट्रस्ट है. फोर्थ, where the trust is created on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension fund, or any other fund created bona fide by a person carrying on a business or profession exclusively for the benefits of persons employed in such business or profession. मतलब सेटलर का कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में जो भी उसके एम्प्लॉइज हैं उस उनके प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्यूएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड या फिर किसी भी अदर फंड के लिए उसने वो ट्रस्ट बनाई है, तब वो एओपी मानी जाएगी. Now here, moving forward, the notable point is that if the private discretionary trust has income from capital gain, it is chargeable at the rate specified under section 112, 112A and 111A. That's the chargeable taxes of the long-term and short-term capital gains of the act, and not at the maximum marginal rate. The rate of tax on capital gain should be at par at the rate applicable to the underlying individual beneficiary. मतलब beneficiaries में जो उन respective sections की जो rate होगी वही उस income पे charge हो जाएगी. Here the notable point is that if the private discretionary trust accordingly, the recipient, that is the beneficiary or trustee, will get the cost of acquisition of the previous owner as per section 49 subsection 1, and even the period of holding would include the period for which such asset was held by the previous owner. इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें अपन ने जो स्पेशल केसेस पढ़े थे इंटर में
कि जहाँ पे अपन को प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग भी मिल जाती है और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी अपन को एज अ बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि कोई भी जब जो कैपिटल गेन की इनकम होगी वो जो बेनिफिशियरी के हैंड में जो टैक्सेबल होगी वो उसको सेटलर का उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग में ट्रांसफर हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी वही सेटलर वाली ट्रांसफर हो जाएगी। बट यहाँ पे कैपिटल एसेट की बात की थी, कैपिटल गेन की। बट नीचे वाले पॉइंट में इन केस अगर सेटलर कोई भी एसेट को एज अ स्टॉक इन ट्रेड होल्ड करता है तो उसमें जो भी कोई भी लॉस हुआ, बिजनेस लॉस, तो वो उसका बेनिफिट, जैसे अपन को बिजनेस लॉस का बेनिफिट मिलता है अगले 8 साल तक, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से अपन सेट ऑफ ले सकते हैं। अगर इसमें कोई भी लॉस हुआ तो जो बेनिफिशियरी है वो उसका बेनिफिट नहीं लेता, बेनिफिशियरी या फिर जिसको भी वो इनकम ट्रस्ट में पास ऑन हो रही है और उसको उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी नहीं मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी नहीं मिलेगा। नाउ क्लबिंग प्रोविजंस पे अपन आते हैं। अब आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द क्लबिंग प्रोविजन सेक्शन 64 इज द टैक्सेशन ऑफ प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। इन केस अगर यहाँ पे केस वाइज है, अगर इंडिविजुअल की स्पाउस एज अ ट्रस्टी है उस ट्रस्ट में और वो इंडिविजुअल खुद एक सेटलर है, तब क्या होगा, ट्रस्टी और ट्रस्टीज डोंट रिसीव द प्रॉपर्टी फॉर देम ऑन बिहाफ और फिक्स तो नहीं था or their own benefit, but are held for the benefit of the beneficiary, and the income arising from the transferred property in trust arrangement in case of spouse as trustee do not affect the clubbing provision. अगर उस ट्रस्ट में इंडिविजुअल की स्पाउस की ट्रस्टी है और इंडिविजुअल खुद सेटलर है, तो जो भी इनकम उसमें एज फॉर बेनिफिशियरीज आएगी उस ट्रस्ट में, उस पे क्लबिंग प्रोविजन एक्ट नहीं होंगे। मतलब वो ट्रस्ट सेटलर के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगी, वो बेनिफिशियरीज के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। सेकंड केस जहाँ पे स्पाउस बेनिफिशियरी है और सेटलर इंडिविजुअल है, then where the settler settles the trust in which the spouse is the beneficiary, then the provision of section 64 subsection 1 clause 7 of the Income Tax Act 1961 would be affected, and the income arising out from the trust property in the hand of trustee for the benefit of spouse will be claimed in the hands of settler. यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर स्पाउस बेनिफिशियरी है तो उसको जो भी इनकम ट्रांसफर की जाएगी वो सेटलर के हैंड्स में ही टैक्सेबल होगी, क्लब होके टैक्सेबल होगी। वापस क्लब हो जाएगी उसके बाद। In case where son's wife is trustee when individual is settler, अगर सन की वाइफ ट्रस्टी है तब क्या होगा, तब सेम जो अगर उसकी खुद की वाइफ ट्रस्टी थी जो अपन ने ऊपर पढ़ा कि क्लबिंग एक्ट नहीं होगा, क्लबिंग प्रोविजन, सेम यहाँ पे भी वही केस है। अगर सन की वाइफ ट्रस्टी है तो भी क्लबिंग प्रोविजन एक्ट नहीं होंगे। अगर सन की वाइफ बेनिफिशियरी है then clubbing provision of course attract होंगे। Now applicability of section 56 subsection 2 clause 10 to the private and family trust, मतलब गिफ्ट का जो अपना अदर इनकम का जो सेक्शन है, गिफ्ट की लिमिट क्या होती है बता सकते हैं? क्या लिमिट होती है? उसके ऊपर गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। उसके ऊपर गिफ्ट अगर जो स्पेसिफाइड पर्सन्स हैं उनके अलावा किसी से लेते हो तो टैक्सेबल है ना। तो इसने क्या पूछा था, गिफ्ट की लिमिट क्या है? गिफ्ट तो कितना भी दे सकते हो। मायावती ने कितने गिफ्ट लिए थे किसानों से, करोड़ों रुपए गिफ्ट आया था है। तो अपन है ना, वी आर प्रोफेशनल, अपने को शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। जितना उसका क्वेश्चन था ना उसके हिसाब से आपको कितना भी ले सकते हैं। आपने 50,000 क्यों बोल दिया? क्यों? क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड पे सेक्शन 56 घूम रहा है क्या? अच्छा, ये भी आंसर 50,000 ही एक्सपेक्ट कर रहा था। ये भी यही सोच रहा था कि 50,000 आंसर आना। ठीक है। Any property received by any private trust for inadequate consideration or without consideration in excess of rupees 50,000 will be taxable as per section 56 to subsection 2 clause 10 under the head income from other sources in the hand of recipient trust basic. However, it is pertinent to note that section 56 subsection 2 clause 10 is not applicable to any sum of money or property received from, मतलब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड है जिनसे अगर गिफ्ट आया तो टैक्सेबल नहीं होगी।
from any fund or foundation or university or other education institution or hospital or other medical institution or any trust or institution referred to in clause 23C of section 10. Second, from or by any trust or institution registered under section 12A or 12AA, by any fund or trust or any university or other education institution or any hospital or other medical institution referred to in subclause 4 or subclause 5 or subclause 6 or subclause 6A of clause 23C of section 10, from an individual by a trust created or established solely for benefit of relative of the individual. Fourth point, from an individual by a trust created or established solely for the benefit of relative of the individual, मतलब individual के relative के लिए कोई trust establish की थी, उससे कोई भी आपको gift आया पिछले वाले प्रोविजंस का फिर मतलब क्या है? जैसे मैं 2 ट्रस्ट बना दूंगा एक की जगह, वही मेरे वाइफ के बेनिफिट के लिए उनके बीच में गिफ्ट करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे solely for the only उसके सिर्फ benefit के लिए लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में है फ्रॉम एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, मैं एक ट्रस्ट की जगह 2 ट्रस्ट बीच में अगर फोर्थ पॉइंट में स्पेसिफाइड है 12A and 12AA ओवरराइड करेंगे। If now moving forward, if the private trust or family trust has received amount of money without consideration for more than 50,000 or removal in property whose stamp duty exceeds 50,000 or for a consideration which is less than the stamp duty value for an amount exceeding 50,000, it will be taxable. When a settler settles a property on the trustee where there is an obligation on the trustee to use the property for the objective of the trust and for the benefit of the beneficiary, it can therefore be said that on settlement of trust, when the trustee is receiving the property, there is an obligation accepted by the trustee, and acceptance of such obligation would be an adequate consideration for the receipt of the property. They were ousting the applicability of section 56, subsection 2, clause 10. मतलब यहाँ पे है settler ने property transfer दे दी without consideration inadequate consideration को trustee को, but trustee ने वो obligation beneficiaries के benefit के लिए accept करी है, तो वो acceptance is in itself is an adequate consideration, so it will not be taxable. When the receipt of the sum of money or property or accrual of any income has already been subject matter of tax in the hands of the trustee or beneficiary, then on distribution of such income or property, no taxable event arises in the hand of beneficiary. This is because there can be no double taxation in the same income. मतलब एक बार जब उसको अपने गिफ्ट दिया, ट्रस्ट के पास गिफ्ट आया, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा, बट जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेनिफिशियरीज को, तब वो फिर बेनिफिशियरीज के हैंड्स में जाके वापस टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उस पर टैक्स लग चुका है। मतलब डबल टैक्सेशन हटाने के लिए ये लाइन ऐड की गई। As per provision to section 56 to 10 of the Income Tax Act, if any such income is received from an individual by a trust created or established solely for the benefit of a relative of the individual, it will not be taxable under this section. That's the point 4 which we covered before. Here. Now, moving forward to section 40A, the disallowable expenditure. The disallowance of cash expenditure by charitable trust exceeding ₹10,000. As per budget 2018, expenditure by private and family trusts governed by section 10, subsection 23C, 11 and 12, for which cash payments exceeding 10,000 is made in a day, deduction of such expenses will not be allowable. Hence, section 40A subsection 3, 40A subsection 3A, 40 and 40A subsection 1A are applicable to private and family trusts also. Moreover, non-deduction of TDS will also attract disallowance in the heads of such trusts. Hence, 30% of total expenses on which TDS is not deducted or deducted but not paid to the government before due date of filing in return of income tax specified under section 39 subsection 1 shall not be treated as application of income under section 11 subsection 1 of the Income Tax Act. यहाँ पे सेम अपना जैसा अपन 30% अपन को डिसअलाउड हो जाती है अगर अपन उस पे टीडीएस नहीं काटा या फिर डिडक्ट कर लिया बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया बिफोर फाइलिंग द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो वो डिसअलाउड हो जाता है। और सेम 10,000 से एक्सीड करके अगर अपन करें कैश एक्सपेंडिचर किसी भी पर्सन को इन अ सिंगल ईयर, तो वो भी डिसअलाउड हो जाता है। बियॉन्ड दिस टॉपिक अगर मैं पूछूं कि इसमें एक और लिमिट होती है, अगर अपन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज इसकी लिमिट होती है सर कैश एक्सपेंडिचर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के लिए वहाँ पे 10,000 की एक्सीड होती
35,000. Now same filing of return 44 AB and 44 AA. If income of private has exceeds the basic exemption limit, अगर basic exemption limit उसकी income basic exemption limit exceed कर देती है तो उनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा. टैक्स ऑडिट कराने के बाद जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फॉर्म नंबर 10B में फाइल होता है. जैसे अपना अदर इंडिविजुअल्स या फिर अदर पर्संस के लिए फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD वगैरह होता है, वैसे इसके लिए फॉर्म 10B होता है. Is required to be uploaded 1 month prior to the due date of furnishing the return of income under the Income Tax Act. अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम प्राइवेट ट्रस्ट की ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करती है तो उसकी टैक्स रिटर्न ITR 5 में फाइल होनी चाहिए. और अगर किसी भी ट्रस्ट को इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना अंडर सेक्शन 139(4)A और 139(4)B और 139(4)C और 139(4)D और 139(4)F, तो उसको ITR 7 में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी. और लास्ट लाइन में अपनी डेट्स है 31 अक्टूबर को अपना रिटर्न फाइल होना चाहिए, 30 सितंबर तक अपनी टैक्स रिपोर्ट फाइल होनी चाहिए. नाउ कुछ इसके ट्रस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे जो मेरे को लगा मैंने इंक्लूड करे हैं. फर्स्ट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंडिया एडवांटेज फंड 7. दैट्स द केस ऑफ 2017 in which was represented in Karnataka High Court. Issue before Karnataka Honorable Karnataka High Court was whether trust shall be assessed as AOP even if requirement of section 164 subsection 1 were not met in as much as the share of beneficiaries were indeterminate or unknown. AO इसमें हुआ क्या था, AO ने 164 मतलब उसको डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट मान के उसके बेनिफिशियरीज पे क्योंकि वहाँ पे बेनिफिशियरीज का नाम नहीं लिखा हुआ था उसके ऊपर 164 लगाया था. So Honorable Karnataka High Court held that for identification of beneficiaries, it is not necessary that the beneficiary in the relevant previous year should be actually named in the order or the instrument of trust or waqf deed. All that necessary is that beneficiary should be identifiable with reference to the order or the instrument of trust or waqf deed on the date of such order, instrument or deed. Hence, in such case, provision of section 164 subsection 1 cannot be applied. यहाँ पे इसमें हुआ ये था कि इसमें 164 लगने के लिए ये जरूरी नहीं कि जो बेनिफिशियरीज है वो प्रीवियस ईयर में डिसाइडेड हो. अगर जब डीड बनी थी तब भी अगर बेनिफिशियरीज डिसाइडेड थे तब तो इसमें वो चीज मान के इस पे सेक्शन 164 नहीं लगाया था. इसमें नॉर्मल जो अपना स्पेसिफिक ट्रस्ट का था वो एप्लीकेबल हुआ था. बाल गोपाल ट्रस्ट वर्सेस ACIT, दैट इज ITET Mumbai. Assessee trust was private specific trust incorporated for the benefit of sole beneficiary who was an individual. The trust sold unquoted equity share to the company and the company agreed to give some consideration by way of a flat. The trust claimed deduction under section 54F जो अपना डिडक्शन का होता है कि आपने कुछ शेयर्स कोटेड शेयर्स सोल्ड करके अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली तब अपन को 54F का डिडक्शन मिलता है, which was rejected by AO on the ground that deduction under said section is available only to the individual and HUF and assessee trust being AOP not entitled to deduction. मतलब उन्होंने AO ने ये सामने रखा कि ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF को मिलता है बट आपकी ट्रस्ट AOP है. तो इसमें ITET मुंबई के ने ये हेल्ड किया that section 161 of the act does not intend to charge tax upon the person other than beneficial owner of the income. Whatever benefits the beneficiary will get in particular assessment must be made available to the trustee while assessing him under section 161. Consequently, a trust is eligible for deduction under section 54F of the act. क्योंकि वहाँ पे बेनिफिशियरी एक इंडिविजुअल था उसको आप AOP नहीं मान सकते और ट्रस्ट का जो स्टेटस है वो भी एक इंडिविजुअल वाला ही लिया जाएगा, इसीलिए ट्रस्ट को सेक्शन 54F का डिडक्शन दिया जाएगा. यहाँ पे ये एक कंफ्यूजन निकला था. The last case is the Commissioner of Income Tax versus P. Sekhar Trust. It's the case of 2010. Shares of all beneficiaries in the assessee trust were equal. उसमें जितने भी beneficiaries थे उनके shares defined थे मतलब specific trustee के equal है. But after marriage of two beneficiaries, they become HUF and on birth of their child, such children also become beneficiaries. यहाँ पे अपना would be wife and would be children वाला case आ जाता है कि उनके वहाँ पे उनके जो बेनिफिशियरीज की उसमें से कुछ 2 बेनिफिशियरीज की मैरिज हुई, उनकी वाइफ्स है एंड कुछ और उनकी फैमिली में कुछ चिल्ड्रंस भी है.
So hence, with the increase in the number of beneficiaries, share of each person get reduced automatically. AO treated the trust as representative assessee and framed assessment under section 164 of the act. उन्होंने AO ने ये बोला कि ये हम इसको डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट मानेंगे क्योंकि यहाँ पे शेयर्स डिफाइंड नहीं थे, बट शेयर्स ऑलरेडी डिफाइंड थे इक्वल, और अपन ने पढ़ा कि स्पेसिफिक ट्रस्ट में वुड बी वाइफ और वुड बी चिल्ड्रन ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, तो उनका शेयर भी डिफाइन हो जाता है। बट यहाँ पे एओ ने ऐसा नहीं माना, तो उसने 164 लगा दिया। 164 में डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट का टैक्सेशन है। Assessee trust contended that shares of each beneficiary can be considered as determinate and therefore assessment of trust cannot be done by invoking provision of section 164 of the act. तो उन्होंने ये बोला हमारे पास सेक्शन 161 लगना चाहिए क्योंकि हमारी स्पेसिफिक ट्रस्ट है, 164 नहीं लगना चाहिए। तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये हेल्प किया कि जो बेनिफिशियरीज की इनकम है वो फ्यूचर कंटिजेंसीज के बेसिस पे उनका शेयर डिफाइन हुआ क्योंकि वुड बी वाइफ और वुड बी चिल्ड्रन उसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं, इसलिए सेक्शन 164 अफेक्ट नहीं होगा, 161 लगाया जाएगा। That's all from my side. Thank you.